in this expression 5x, what are the terms? This is an expression. क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 5 multiplied by x. Now if I ask, can you tell me the terms of this expression? Then they are not 5 and x. क्यों? Because here they are separated by multiplication. और हमने क्या कहा? They have to be separated by addition or subtraction. ठीक है? So इसमें this 5 and x, they are not terms. It is just one term. This is one term. 5 and x are not two terms because they are separated by multiplication. और हमने कहा terms of expression कौन से होते हैं? Which are separated by addition or subtraction. अब if I say okay, इसमें 5x में there are two factors. 5x के factors क्या हैं? Factors of 5x. They are 5 and x. There are two factors because हमने factors and multiples पढ़े हैं. Factors क्या होते हैं? When you multiply two numbers, you get a multiple. So 5x is a multiple and 5 and x are factors. So ये याद रखना. Factors and terms, they are somewhat different. Okay, now let's go back to 5.21. Parts of algebraic expression. इसमें हम छोटी छोटी एक आध एक्सरसाइज करेंगे, देन रेस्ट यू डू इट ऑन योर ओन. इसमें और क्लैरिटी आएगी. Aviv and Marco, ये तो छोड़ो, ये तो these are names. We're trying to describe parts of the expression. So this is the expression. What is the expression? 5a divided by 2a plus 3. अब इसमें इस एक्सप्रेशन में एविव ने कहा the entire expression is a quotient of 5a and 2a plus 3. Marco said on its own 2a plus 3 is a sum of two terms. Who is correct? Aviv correct है, Marco correct है, neither student is correct, both students are correct. 5a upon 2a plus 3. Aviv said entire expression is quotient of 5a and 2a plus 3. Is it correct or wrong? शाबाश. माइक ऑन ही रखो आप लोग so that we can interact. Otherwise मैं ही बोलते जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं. So 5a is the expression is quotient. तो quotient तो है. Quotient क्या होता है? When two numbers are divided, you get a quotient. So if I say 5 divided by 15 divided by 3, quotient is 5. So this whole expression is a quotient of 15 and 3. इसी तरीके से ये expression में 5a जो है, that is divided by this part. So this is correct. Aviv ने जो बोला that is correct. So Aviv is correct.
Marco said on its own 2a plus 3 is sum of two terms. Is it correct or wrong? Again it is correct because there are two terms. अब ये इस expression में 2a plus 3 में there are two terms. Why are there two terms? Because they are separated by plus, by addition. So he is also correct. So we can choose D. अब कौन बताएगा? Consider this expression. Complete. अब इसको the entire expression is a sum with अब इसमें कौन सा करेक्ट है? 3 factors, 4 factors, 3 terms, 4 terms. 3 factors. 3 factors. Factors को क्या होते हैं? Factors होते हैं when you multiply. Sir, 3 terms. 3 terms, okay? Because this is one term. अब इसमें 3 terms है या 4 terms है? Because you have 4 factors, 3 terms, 4 terms. A plus B plus 1 plus 2C. अब इसको अगर तो if we consider this as one term, this is second term, this is third term. But इसमें भी if you अगर देखोगे इसमें भी they are separated by addition. तो अगर इस expression को हम open करें, this becomes A plus B plus 1 plus 2C. Then there are 4 terms. So मेरे को वो लग रहा है 4 terms. Let's see if we consider this 4 term. और मे बी क्योंकि ये ब्रैकेट है इसको एक ही टर्म मानते हैं. लेट अस सी द आंसर. फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑन इट्स ओन 2C इज ए प्रोडक्ट विद व्हाट शुड बी द आंसर? शाबाश. कौन बताएगा? जो 2C है वो क्या है? इट इज 2C इज ए प्रोडक्ट ऑफ 1 factor. 1 फैक्टर. कैसे? 2C का क्या मीनिंग होता है? 2C means 2 multiplied by C. So there are 2 factors. 2 and C are multiplied. So they are 2 factors. 2 factors. Let us check. Not quite. देखो इसमें ब्रैकेट इसमें देखो if you show a step. देखो इसमें समझा है. A factor is something which we multiply to get a product. A term is something we add to get a sum. So ये देखो यहाँ पे हमने गलती की. जैसे I opened the bracket, so it should be one term. क्योंकि ब्रैकेट में ये कंप्लीट टर्म. So there is 1 term, 2 term, 3 term. तो इसका हम आंसर रेक्टिफाई करते हैं. So we will do 3 terms and 2 factors. Check again and then do next question. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आप करना in 5.21. Then we do 15.21, then 15.22. Like terms with distribution. Like term क्या होते हैं? Who will tell me like term? वेरिएबल सेम होना. वेरिएबल सेम होना चाहिए along with the power.
पावर भी सेम होना चाहिए. For example, if I write an expression 2x square plus 3x plus 5x square. अब इसमें लाइक टर्म्स कौन से होंगे? 2x square plus 5x. हाँ, एक तो वेरिएबल सेम होगा और उसका पावर भी सेम होना चाहिए. अब इसमें पावर x का, व्हाट इज द पावर? 3x का पावर इज 1, here पावर इज 2. सो ये और ये आपस में लाइक टर्म, दे आर अनलाइक, whereas these two are like. So you can add or subtract only like terms. हम यहाँ लिख सकते हैं, we can add or subtract only like terms. But अगर unlike है, we can multiply or divide both like as well as unlike. Both like and unlike. ये याद रखना है, important है. When we are multiplying or dividing, ये दो ऑपरेशन, we can multiply or divide like and unlike. But if we do only addition and subtraction, then they have to be only like terms. ठीक है? So let's go back to this. Combining like terms. अब like terms को you have to combine. Again, these are very simple. Simple exercise. Simplify to create an equivalent expression. तो इसमें क्या है? 7 plus 6. Now 6 is being multiplied by the whole set of numbers, which is 1 plus 4e. That's why we have put them in bracket. तो bracket के बाहर जो number होगा, we have already read, it gets distributed. हमने distributive property पढ़े. So पहले 6 को इससे multiply करेंगे, फिर 6 को इससे multiply करेंगे. So what will be the answer? 7 plus 6 into 1 is 6. Then 6 into 4e. And when you multiply, you should always remember, you have to multiply along with the whole number, the integer, plus 6e. Plus 6e को multiply करना है with, plus नहीं बोलना चाहिए, positive. Let's say positive 6 को we have to multiply by positive 4e. So 6 4s are, and positive is, when we multiply it is positive. 6 into 4 is 24e. And when you have to simplify, now you have to add only the like terms. ये constant है, only they will get added. So 13 plus 24e will be the answer. Let's do next कर लेते हैं. तो जैसे ये क्वेश्चन है, these are very simple questions. ये तो आप लोगों ने छोटी क्लास में किया है. So do this exercise also. Like term with distribution. इनकी प्रैक्टिस करना है सबों की. उसके बाद we will go to थोड़ा सा higher concepts. Then we have like term, negative coefficient and distribution. I hope negative coefficient के इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती.
when you have negative numbers. बताओ जरा आंसर. ये एक एक्सप्रेशन है. दिस इज वन एक्सप्रेशन. यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. डू इट क्विकली. ये तो आपको फटाफट आना चाहिए. शाबाश. कॉपी में करो जल्दी से. Yes, who will tell me the answer? C. C. तो इसमें क्या है? फटाफट you have to multiply. This is positive 4. Now positive 4 has to be distributed on to these two numbers. Positive and negative is negative. 8 4s are 32 cube. Positive and negative is negative. 4 4s are 16. And then you have 10. So 32 cube is your negative 32 cube. Again, negative 16 and positive 10. If you add them, because one is positive, other is negative, they get subtracted. So 16 में से 10 minus किया तो negative 6. So C. तो इस तरीके से you do this. So what I would like you to do is, क्योंकि हम आगे आगे फिर फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा. जैसे पॉलिनोमियल्स है. पॉलिनोमियल ये भी 7th क्लास का है. विद वन वेरिएबल ये भी 7th क्लास का है. एक्सप्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स ये भी 7th का है. So I would like you to do all these exercises so that we move on to equations and then we go to equation 2. इसमें बहुत सारा है और ये आगे 10th में जो 10th के हैं उनके लिए आगे है. So इसका just do it quickly, these exercises. Then we will do difficult questions for 10th class.